Welcome to the Quant question of day SQ004. This question is from geometry, slightly heavy question. Don't worry, but you will be able to manage. But very good question from your CAT point of view. Let ABCD a square of side unit length. The circle C1 centered with A unit radius is drawn. अब इतना पढ़ने के बाद ही आधे बच्चों का बत्ती गुल हो जाता है. See, in case of a geometry question, if you are able to draw the correct diagram, 50% problem is solved. So in this case हम क्या देख रहे हैं कि भाई हमारे पास एक स्क्वायर है and this square is of unit length and circle C1 is centered at A with unit 1, right? This is also unit radius. Okay. Another circle यहाँ से important है is drawn which touches C1 and the line AD and AB tangent to it is also drawn. अब यहाँ तक अगर आपने ये पहले शेप देखी हुई है तो ड्रॉ करना इजी होगा, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट होगा. हम कोशिश करते हैं इसको ड्रॉ करने की कि हमने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेना पहले. तो ये स्क्वायर ड्रॉ किया. नाउ ही सेइंग अ सर्कल सेंटर्ड विद ए इज ड्रॉन. ए सेंटर के साथ एक सर्कल ड्रॉ किया गया. आपका ए सेंटर के साथ एक सर्कल ड्रॉ करना है तो ए सेंटर के साथ ऐसे सर्कल ड्रॉ करेंगे, राइट? पूरा ये ऐसे, हमें बस इतना ही चाहिए. और अनदर सर्कल कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? सेंटर में ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे, जो इसको यहाँ से टच कर रहा है. नाउ इफ यू आर एबल टू ड्रॉ दिस मच, आई वुड से वेरी गुड, अदरवाइज यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन अंडरस्टैंडिंग दिस. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी. नाउ अब ये आपको क्या कह रहा है? लेट अ टेंजेंट लाइन सी circle C2 meets side AB at E. So from here it goes like this and meets here, so called E, right? Now what is asking you? Find the angle ECB. ECB ये वाला एंगल आपको पता करना है, right? How much is this angle? ये आपको पता करना है. Now this is the question. So this seems a difficult, challenging question. डायग्राम बना दिया. अगर आप इनमें से कोई ऑप्शन आपको लगता है आप सॉल्व कर पा रहे हैं ज़रूर करिए. और यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई सॉल्विंग इट योरसेल्फ एंड देन यू कैन सॉल्व इट, सी द सॉल्यूशन आल्सो. नाउ देखो यार, दिस इज अ सर्कल, तो दिस मस्ट बी हैविंग सम रेडियस, राइट, which will be equal. So I will call it as r, r, r. Now this will be root of our solution, right? Because the relationship of this r with the whole circle and the bigger square, square and the bigger circle will be the root to the solution. I will try to join this, passing through this, meeting here. So I know this is my r root 2, right? This value is my r. This value from here to here is 1. So can I write it as, I'll just erase this. 1 minute. Yeah. So I will write r plus r root 2 is equal to 1. So from here my r becomes root 2 minus 1. इसको सॉल्व करेंगे, r root 2 minus 1 आ जाएगा. Now my r is root 2 minus 1. I can draw a perpendicular here also, right? So this r is, this is r, this length is r, and total length is how much? Root 2. Total length is root 2, right? Because this is 1, this is root 2. So how much is this CO? Let this point is O. So how much is CO? CO will be equal to root 2 minus this length. How much is this? This is r root 2, this from here to here. So this is root 2 into root 2 minus 1. How much is that? 2 minus root 2, right? So this is my, this length, r root 2, okay? And I need to find from total root 2 minus 2. So this length is 1 and this is total 2. This length is
r plus root 2, r is equal to 1, absolutely right. So what we get is root 2 minus 1, right? Yeah, this is what we are getting. So r very clear, r is root 2 minus 1 and r root 2, this length is r root 2, okay, and so this will be 2 minus root 2, right? So root 2 minus root 2, so this will be plus root 2. So CO will be 2 root 2 minus 2, or it will be twice of root 2 minus 1, right? So my CO will be equal to 2r. CO is equal to 2r because r is equal to root 2 minus 1. So if this is r, this is 2r, right? This is 2r, right? So what I can say, this angle theta, we can find it out because this relationship r and 2r exist. Where does, because this will be 90 degree, ये कहाँ exist करता है? When this is 30 degree, right? Because in 30, 60, 90 triangle, ये मेरा r हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा, so sorry, ये 2r हो जाएगा. So 30, 60, 30 के सामने वाला r and this is hypotenuse 2r, so this angle is 30 degree. So if this is 30 degree, this angle comes out to be 15 degree, right? तो ये 15 डिग्री आ गया. बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है. और इससे हमें एक और चीज पता चल रही है कि इफ दिस इज r, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू r, दिस मच इज ऑल्सो इक्वल टू r, राइट? ये भी r निकल के आ रहा है आपका. ओके गाइज, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. आई होप यू एंजॉयड द क्वेश्चन. वेरी गुड क्वेश्चन, और ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाएगा इससे. ऑल द बेस्ट फॉर योर कैट एग्जाम.